Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 3. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, आपको ये प्रूव करना है that triangle ABC is isosceles. Okay? So what we will do? सबसे पहले हम ये देखेंगे, दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. दे आर द ट्राइंगल्स BFC एंड ट्राइंगल CEB. इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें इन द फिगर, सो वी हैव BE एंड CF. ये दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स लिखा हुआ है. सो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स मतलब ये दोनों इक्वल हैं. इट इज गिवन टू अस. नेक्स्ट वी हैव BE इज इक्वल टू CB और BE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CB एंड दैट इज देयर कॉमन. एंड नेक्स्ट वी हैव एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री पे कट करते हैं. इसकी वजह से वी कैन से that the triangle BFC and the second triangle that we have is CEB, they are equal to each other and the property that is being applied is RHS congruence rule. अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं that angle FBC is equal to angle ECB by the property CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. And ultimately we can say that angle ABC is equal to angle ACB, FBC is equal to ABC and ECB is equal to ACB and ये दोनों आपस में इक्वल है. एंड इस वजह से AC is equal to AB, क्योंकि ABC के सामने वाली जो साइड है वो है AC एंड ACB के सामने वाली जो साइड है वो है AB. So sides that are opposite to equal angles, they are equal. That means AC and AB, they are equal. So इससे we can say that triangle ABC is an isosceles triangle.